हेलो गुड मॉर्निंग, मैं से डॉक्टर आर्यन और आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन के समय इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरकैलेमिया? गॉर्डन सिंड्रोम, आर्बिसिलाइसिस, लीडर सिंड्रोम, एडिसन syndrome. Leader syndrome is the best answer because the leader syndrome is the gain of function gain of function of ENaC. ENaC means leading to more sodium, leading to more sodium reabsorption, and leads to loss of पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। तो क्या कॉज करेगा ये? हाइपोकैलेमिया। दिस वन इज द हाइपोकैलेमिया। गॉर्डन सिंड्रोम क्या होता है? इंडिसिटी, गेन ऑफ फंक्शन, सोडियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर एंड एडिशन डिजीज इफ एल्डोस्टेरोन इज डिफिशियंट, सो यहाँ पे क्या होगा? पोटेशियम एक्सेस में होगा, पोटेशियम एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज नॉट लीड टू अ हाइपोकैलेमिया? लीडर सिंड्रोम, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, diabetic ketoacidosis not lead because the acidosis can lead to hyperkalemia. Acidosis can lead करता है hyperkalemia rather than the hypokalemia. DKA then sugar, then solvent drag, then potassium क्या कॉज करता है? efflux, द पोटेशियम आउट ऑफ सेल्स इनटू द ब्लड। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज पोटेशियम। सो इन एसिडोसिस पोटेशियम कम्स आउट ऑफ द सेल। इन लीडर सिंड्रोम अभी हमने बात किया रीनल लॉसेस लीड्स टू क्या? हाइपोकैलेमिया। एंड रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 लीड विद हाइपोकैलेमिया। Next question, a 26-year-old female present with menorrhagia and excessive bleeding after minor surgery. She gave the history of father and sister having same bleeding issue and pattern of inheritance were determined to the autosomal dominant. What is the most likely disorder? Von Willebrand disease is the most common. Here the most common causes of bleeding and follows an autosomal dominant is the von Willebrand disease. Here the given clinical scenario also shows the autosomal dominant inheritance pattern as father and her sister is also having the same bleeding problem. If you talk about the hemophilia and Christmas tree, the Christmas tree is the X linked. सो यहाँ पे ऑप्शन रूल आउट हो गया। फर्स्ट आप ऑप्शन को रूल आउट करने का ट्राई करो। तो यहाँ पे हीमोफिलिया ए या क्रिस्मस डिसीज रूल आउट हो गया। एंड फैक्टर 10 डिफिशियंसी है बोथ ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है, बट एडी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड इज लेस कॉमन इन द factor 10 deficiency. Next question, a 38-year-old male patient complains of paranasal sinus pain and bloody nasal discharge over the past few days. He has a history of previous hemoptysis and hematuria. Imaging study revealed multiple bilateral nodular cavities infiltrates. Which of the following antibodies is likely to be positive in this patient? C, इनका is the best answer because here these antibodies are associated with granulomatosis with polyangiitis. This one is the Wagner granulomatosis, a vasculitis that can involve multiple organs including the respiratory tract में पैरानेजल साइनस इन्वॉल्वमेंट होता है, लंग्स होता है, नोड्यूलर कैविटरी इन्फिल्ट्रेट्स एंड किडनी हीमेचूरिया। ये ना आपको एसएलई में मोस्ट कॉमनली सिस्टमिक लूपस इथेमेटिस एंटीहिस्टोन विद ड्रग इंड्यूस्ड एंटीहिस्टोन एंटीबॉडी ड्रग इंड्यूस्ड लूपस एंड एंटीजो एंटीबॉडीज एसोसिएटेड विद polymyositis एंड dermatomyositis एंटीजो एंटीबॉडी polymyositis and dermatomyositis. Next question, which is the most common cause of the CKD? Diabetic nephropathy. Diabetic nephropathy is the most common cause of the CKD. Here we can discuss about the causes of CKD.
क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट, क्रोनिक क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड इस्चेमिक नेफ्रोपैथी, इस्चेमिक नेफ्रोपैथी एंड autosomal dominant polycystic kidney disease and chronic tubulointestinal disorder CTID, also referred इसको क्या बोलते हैं, also referred to as anyone also referred to as ciliopathies, क्या बोलते हैं? ciliopathies. So today that's all. Thank you and keep watching.